Assalamu alaikum, my dear students. Hope and pray you are all fine. So, a very good news for you is that we have wrapped up the poetry section. Now we'll be back to the prose. So, in today's video, I'm going to take up your second prose, that's An Excellent Father, composed by Jane Austen. So, my dear students, let me first of all talk about Jane Austen. So, Jane Austen was an English novelist. She is primarily known for her 6 major novels, which include Sense and Sensibility, that she published in 1811, then Pride and Prejudice, 1813, Mansfield Park, 1814, Emma, 1815, Persuasion, 1817, and ultimately Northanger Abbey, 1817. Right? So she was born on 16th of December 1775 at Steventon in Hampshire. My dear students, Jane Austen spent most of the time, she spent 26 years of her life there in Steventon in Hampshire. She died on 18th of July 1817 at Winchester Cathedral in England. My dear students, Jane Austen's father's name was Rev. George Austen, who was the rector of Steventon and the most reputed person. Her mother's name was Cassandra Austen Leake, and she had a lively mind and keen sense of humor. The Austens had 8 children, 6 boys and 2 girls, Jane being the 7th one. Jane Austen, my dear students, was the prettiest, silliest, most affected husband-hunting butterfly. My dear students, Jane Austen never married, nor did her sister Cassandra. Although Jane did receive a proposal of marriage, but she did not want to marry where she did not love, so she declined the proposal. Right? So, in the very beginning, Jane wrote for the pleasure of writing, क्योंकि उसको ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसको पता था ये पब्लिश नहीं होने वाली है. बट लेटर ऑन उसको ये भी रियलाइज हुआ, उसको यकीन भी था कि एक आर्टिस्ट अपना काम केयरलेसली नहीं कर सकता है. शी बिलीव्स दैट an artist cannot do anything solo only. Jane Austen is one of the greatest novelists of the 19th century. She belongs to an age of transition. She occupies a high place among female novelists of England. Her contribution to the English novel is noteworthy. She was a very careful artist who imparted realism to her novels. She wrote her novels from the feminine point of view, and she also feminized the English novels. If we talk about the theme of Jane Austen's novels, the usual theme of Jane Austen's novels is love and marriage. So in almost all of her 6 novels, there are beautiful girls waiting for rarely eligible bachelors to get married to them. Their mothers, their aunts are always contriving, always devising a plan how to trap these eligible bachelors. In her love novels, a young man falls in love with a rich and desirable man. She has to face a lot of difficulties in the way of her marriage, but everything ends very well. Austen is against illicit love. Love must terminate in matrimony.
According to her, mutual harmony is essential for a successful marriage. She realized that husband and wife should be spiritual counterparts of each other. A perfect marriage is fundamentally a perfect friendship. Marriage without this is no marriage at all. Pride and Prejudice deals with the same theme. So this was all about Jane Austen. So now let's talk about the overview or the epigraph of the prose, an excellent further. So let's get started. This extract has been taken from Jane Austen's famous novel प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी ये जो एन एक्सलेंट फादर है इसको डिराइव किया गया है, इसको निकाला गया है एक फेमस और मशहूर नावल से जिसका नाम प्राइड और प्रेजुडिस है। ठीक है, सो दिस एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे जो वर्ड एक्सट्रैक्ट है ये ग्रामेटिकली नाउन है। अगर एक्सट्रैक्ट एज वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाती है। एक्सट्रैक्ट एज अ वर्ब मीन्स टेक आउट, टू रिमूव, डिराइव करना, निकालना। एक्सट्रैक्टेड, निकाला गया। लेकिन यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का मतलब है एक्सर्प्ट, पैसेज। कोई भी चीज जो किसी बुक या किसी पोएम से हम लेते डिस्कशन के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट एज नाउन। तो इस एक्सट्रैक्ट यानी यहाँ पे कौन एक्सट्रैक्ट है, एन एक्सलेंट फादर, इसको प्राइड और प्रेजुडिस से निकाला गया है। इफ वी लुक एट द टाइटल ऑफ दिस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज प्राइड एंड अनदर इज प्रेजुडिस। सो प्राइड क्या होता है, जिसको हम फखर बोलते हैं, घमंड, हार्टीनेस। ठीक है, सो इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर, जो हीरो है, उसका नाम होता है डार्से, और जो इस नॉवल की हीरोइन है उसका नाम होता है एलिजाबेथ। डार्से प्राइड को सिंबलाइज करता है और एलिजाबेथ प्रेजुडिस दिखाती है। सो व्हाट्स प्रेजुडिस? प्रेजुडिस इज एन अनफेयर एंड अनरीजनेबल ओपिनियन और फीलिंग, स्पेशली व्हेन फॉर्म्ड विदाउट एनफ थॉट और नॉलेज। जब आप किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में अपनी राय देते लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं होता है, ऐसे आप अपनी ओपिनियन फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, उसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तासुब। ठीक है, सो जब डार्स से पहली बार एलिजाबेथ से मिलता है, कहाँ पे, एक बॉल में, क्योंकि आप खुद देखेंगे जो जैन ऑस्टन थी, शी वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वो बॉल्स में जाया करती थी। और इस नॉवल में भी प्राइड और प्रेजुडिस में जब वो बॉल में जाते तो पहली मुलाकात उसको डार्से के साथ होती है, और डार्से पहले इसको लगता है इसमें प्राइड है, ये घमंडी है, क्योंकि जब मिस्टर बिंगले डार्से को ये बोलता है कि आप एलिजाबेथ के साथ डांस कीजिए, तो डार्से वहां पे बोलता है शी इज नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी। इस पर एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और शी गॉट वेरी मच प्रेजुडिस्ड टुवर्ड्स डार्से। सो दैट्स व्हाई प्राइड एंड प्रेजुडिस। और एक और बात, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जब ये स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट्स विथ आयरनी। ठीक है, जो पहली लाइन्स है उनमें आयरनी है, वो आयरनिकल स्टेटमेंट से शुरू होती है ये नॉवल। सो क्या है पहली लाइन्स? इट्स द ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, इट्स अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ ए वुमन। ठीक है, यानी हर एक ने एक्सेप्ट किया है, जो बंदा जिसके पास काफी सारी दौलत होती है और यहाँ से बैचलर भी होगा, वो हमेशा किसकी सर्च में होता है, किसकी तलाश में होता है? बीवी की तलाश में होता है। लेकिन जब आप ये पूरी नॉवल पढ़ेंगे या जब आप ये एन एक्सलेंट फादर भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इट्स नॉट एक्चुअली मिस्टर बिंगले हु इज इन वांट ऑफ ए वाइफ, बल्कि ये मिसेस बेनेट होती है जो चाहती है कि कब मिस्टर बिंगले आ जाए और किसी एक बेटी के साथ शादी करे। ठीक है, सो दिस इज आयरनी। तो आगे चलेंगे। नेदरफील्ड पार्क इज वैकेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम,
सो इस ये जो नेदरफील्ड पार्क होते हैं, नेदरफील्ड पार्क इज एक्चुअली द नेम ऑफ ए हाउस जो कि इस मिस्टर बिंगले जो मिस्टर बिंगले किराए पे लेता है, ठीक है। सो वहां पे वो अपनी सिस्टर के साथ भी रह रहा था, ठीक है। और ये जो मिस्टर दार से होता है, ही इज ए फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ दिस हाउस नेदरफील्ड पार्क। और ये जो नेदरफील्ड पार्क थी, इट हैज बीन अनऑक्यूपाइड, देयर वाज नोबडी लिविंग देयर, ठीक है। काफी टाइम से ये खाली पड़ी थी, ठीक है। इट वॉज एम्प्टी, इट वॉज वैकेंट, ठीक है। At last, a rich young gentleman, Mr. Bingley, decides to take the place. So eventually, this this aristocratic person called Mr. Bingley, he takes this place. ठीक है, ये इसको किराए पे लेता है, ठीक है। When Mrs. Bennet comes to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. So जब मिसेस बेनेट को ये बात पता चलती है, ठीक है, उसको किसी सोर्स से पता चलता है, ठीक है, क्योंकि यू नो पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर वेलबींग ऑफ देयर डॉटर्स, ठीक है। जब इसको ये बात पता चलती है, शी इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हर जॉयज न्यू नो बॉन्ड्स, शी फेल्ट एज इफ शी इज ऑन क्लाउड 9, ठीक है। शी गॉट सो मच इलेटेड एंड एक्साइटेड बिकॉज शी होप्स दैट मिस्टर बिंगले माइट मैरी वन ऑफ हर डॉटर्स, क्योंकि इसको एक उम्मीद होती है शायद मिस्टर बिंगले में फेल इन लव विथ वन ऑफ हर डॉटर्स एंड में मैरी, ठीक है। सो इसने यहाँ पे वर्ड माइट का इस्तेमाल किया है। माइट एज अ मॉडल ऑक्सिलरी शोज डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे ज्यादा डिस्टेंट पॉसिबिलिटी नहीं दिखाता है, ठीक है। माइट रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। दैट्स वाई इसने माइट का इस्तेमाल किया यहाँ पे। मिस्टर बिंगलेज बीइंग सिंगल मेक्स मिसेस बेंट ऑल द मोर पर्टिकुलर अबाउट इट। और मिस्टर बिंगले का बैचलर होना, ही वॉज अ बैचलर, ठीक है। और जो ये सिंगल था, बैचलर था, दैट्स वाई मिसेस बेनेट को इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो इस चीज को बहुत ज्यादा पर्टिकुलर लेती है, वो इसको बहुत ज्यादा खास लेती है, ठीक है। दैट्स वाई उसका पूरा ध्यान इसी चीज में होता है कि कब मिस्टर बिंगले मेरी किसी न किसी एक बेटी के साथ शादी करे। शी वॉन्ट्स मिस्टर बेनेट नॉट टू मिस सच एन एक्वेंटेंस, दैट्स वाई शी वॉन्टेड हर हस्बैंड टू डेवलप अ फैमिलियरिटी विथ मिस्टर बिंगले, ठीक है। वो चाहता था, एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियरिटी, जान पहचान। ये चाहती थी कि मिस्टर बेनेट उसका हस्बैंड होता है, कि वो इस एक्वेंटेंस को, इस खास मौके को मिस न करे फॉर द सेक ऑफ देयर डॉटर्स, अपनी बेटियों की खातिर। शी हैज एन एप्रीहेंशन, क्योंकि शी वॉज एफ्रेड, उसको डर होता है, उसको खदशा हो जाता है, दैट सम अदर मदर विथ एन एलिजिबल डॉटर वुड एक्सप्लॉइट सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उसको डर ये होता है कि शायद कहीं कोई कहीं ऐसी बात ना हो कि कोई नेबरहुड में कोई ऐसी माँ आ जाए अपनी एलिजिबल डॉटर को लेके, और वो इस सुनहरी मौके को एक्सप्लॉइट करे, ठीक है। एक्सप्लॉइट मीन्स जब आप कोई चीज यूज अनफेयरली करते, ठीक है, किसी का गलत फायदा उठाते। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिग्राफ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो we'll go through the detailed explanation. So I'll stop here. Thank you. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.